Guys, welcome back to my channel after such a long time, almost a month now. She's glowing. Look at the dimple here. The thing I'm saying, bad news. Okay, मैं vlog करना भूल गई क्या? बताओ तुम कहाँ जाके आई हो अभी? इतना सुबह सुबह. Yes, the news is Smriti is finally. Leaving Jaigaon. Finally. Should I be happy or sad? I don't know, but I'm happy for her because ये लड़की को काम चाहिए था and she wanted to first घर में रहना चाहती थी after so long क्योंकि हम लोग बाहर ही रह रहे हैं. स्पेशली ये तो स्कूल डेज से ही बाहर रह रही है. She was in कहाँ पे थी स्कूलिंग के लिए? तमिलनाडु. She was in Tamil Nadu. Oh my God. She was in Tamil Nadu for schooling for almost 5 years. उसके बाद आके she stayed in Calcutta for 4 years for her graduation and then after that she wanted to come home. घर में आके भी सिलीगुड़ी में काम किया almost a year. She wanted to have a break with her family, with her friends. तो आराम से ये घर में रह चुकी है अब almost कितना 6-7 महीना. हाँ 6-7 months हो गया है इसको घर में रुका हुआ. तो अभी ये चाहती है कि अपना पंख फैला के बाहर कहीं दूर चली जाए एंड दूर जा रही है ये कैलकाटा. शी इज गोइंग बैक टू कैलकाटा लीविंग मी अलोन. सुपर. अब तो अलोन भाई कौन सी जाते जेबी जेबी संडे का टाइमिंग वी यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर. आई मीन we had a bonding. The emotional thing about me is we had a bonding from our college days only, but यहाँ घर में आके like almost every 2-3 days we used to meet. Every week we had a plan to go out. कुछ भी नहीं तो just घर में बैठो rant करो अपने life के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब करते थे हम लोग. तो now we will, because I want her to have some memorable evening before she leaves. इसका कल का ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी. ये तत्काल से काट के आई है ट्रेन का टिकट फ्रॉम हासिमारा. तो इसका एसी का टिकट भी बुक हो चुका है एंड इसको पैकिंग भी करना है शाम को. तो आई वांटेड हर टू स्टे फॉर द इवनिंग विद मी एंड इसका कुछ शॉपिंग वगैरह है ये भी करेगी. We're ready to move out and this is our OT day. Okay, it's my strappy heel for the first time I'm wearing it. So bloated both of us. Yes. Tired. Let's go. Finally, we are entering JB. This girl wants some things. Shortहरू office wear को लागि casual office wear daily normal wear को लागि चाहिँ हाम्रो JB is the best. यही सँग पनि छ यो. Smriti, it's so perfect. हिंदी मेरा बहुत बुरा है. But at least you need to practice. Like how are you feeling for the last time you were shopping in JB? You're gonna miss Jaigaon. You're gonna miss JB. Jaigaon miss किया तो JB is the heart of Jaigaon. JB miss करेगी. ये दुईटा गर्दिनु त्यो त हैन त. She's buying this too. सबको अनलाइन पे हुन्छ. Thank you. Finally, we are done shopping in JB and I am sitting on the heap of this sweats. So the best thing is like whenever we had to come JB, जब भी हम लोगों को JB में आना होता है तो we to come along with each other all the time, every time. So I'm gonna miss her if I ever have to come JB Abbo from now on because she won't be here and we're gonna reveal where she's going at the end of the video. Oh my God. के भन्छौ मेला फिर से मेला लग रहा है क्या? यो लेखा हुआ है अहिले आउँदैछ मेला यो हेर्नु जयगाउँ इन्टर स्कुल 2022 ओपनिङ मेला लाग्यो गोपी मोडमा. Oh wow. मेला लाग्यो पुरा मजा आउँछ अहिले ठुलो ठुलो मजा आउँछ मेलामा अब यो पालि आउनु नि सबै पुरा भिड हुन्छ. म हामी भुटानको थोडी न हामी जयगाउँको. यो सिधै हेर्नु त भुटानको लाग्छ पुरा गोरी गोरी छ नि त्यसले भुटानको देख्छु.
के भएको नि भिडियो मेरा गेट खुला थियो न पुरो भिड थियो अहिले त गेट खुला छैन पुरा भिड हुन्छ अब त हुन्छ त Oh my god you're gonna miss the Mela donation this is how we're gonna pay 10 rupees Suruh tanya memang sorry. Dah cuma oi. Do I need to bum jual deh take that? Anti omolo. You didn't say me oh wow this is the ticket to Bhutan now हो चुके हैं भूटान हम लोग जब भी हम लोग आते हैं ना भूटान के अंदर we feel so peace and relaxed just like this water why don't you throw a coin today हम लोग जब भी आते हैं I think I have Let's throw coin. तो it's so peaceful whenever we come here but the sad thing is यहाँ का rules बहुत ही ज़्यादा strict होने लगा है अभी golden hour Smriti golden hour your face एकछिन म पहिला विश माग्छु ल नानीको चाहिँ विश माग मेरो लागि नि विश माग Of course, darling. You'll always be there in my wish list. Not wish list, ल विश लिस्ट but in my prayers. ओइ त्यसरी फ्याङ्छ ओइ यसरी फ्याङ्दिन्छ के हुन्छ अगाडिबाट फ्याङ्दिन्छ के हुन्छ अगाडिबाट फ्याङ्नु हुँदैन नि त हेर्नु हुँदैन You're not supposed to see यत्रो मैले फ्याङ्किसकेर हेऱ्यो मेरो लागि पनि विश गरिदिन्छ अरे दिस इज कल्ड ट्रु फ्रेन्डसिप गाइस I cannot tell you what has happened to us right now. We had forgotten. Main कुरा हम लोग पहले की तरह अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में लाइक Times kitchen. ट्राई करने के लिए बट क्या हुआ था कि ATM से पैसा निकालना भूल गया था और यहाँ पे इनसाइड भूटान गूगल पे वगैरह कुछ भी नहीं चलता तो आज भी सिचुएशन यही हुआ बट बाय गॉड्स ग्रेस वी फाउंड सम इंडियन पीपल थैंक यू टू दैट अंकल एंड आंटी वी गॉट द कैश जीपे कर दिया हम लोगों ने इसके फ़ोन से एंड इसका नेट अच्छे से चल रहा था थैंक गॉड तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट दिस इज द रेस्टोरेंट द वे टू रेस्टोरेंट लेट्स सी how it's gonna be this is the one we are here let's get in cheese यहाँ चाहिँ जिम्मा प्रिटी देखिरहेको So I think we're gonna have this one ना kimbap उयो हम लोगों का फूड आ गया दिस इज डिपिंग दिस इज pork sesame this is Smriti and her strawberry shake and our main attraction is this one kimbap because a lot is left. The best thing is that this is the first time we two are trying Korean food. We have been dreaming of trying Korean food and aaj aa gaya time. Now this is going inside my mouth. यसरी पनि टेस्टी भयो मजाले अब चाहिँ यस्तो पत्ता चाहिँ चाहिएको नि यसरी खाँदैन कोरियन बार्बिक्यू चाहिँ यसरी खान्छ कोरियन बार्बिक्यू ऱ्यापर दिन्छ र लिफ दिन्छ कि त्यो पाजोरी भन्ने लिफ दिन्छ त्यसलाई त्योसित ल्याउँछ It's so silent here.
So this is also kind of a sale inside वो restaurant का सामने ही था, and we have come to check out if there are some things which we can buy or willing to buy. And I'm gonna end this vlog right here. It's just a day of going out, trying new things, trying Korean food, and it was good for me. And it's a day to say goodbye to Smriti from Jago because she's going away tomorrow. And yeah, that was it. Bye bye everyone. But I know you're gonna do well. You're gonna have all the things that you wanted, the freedom, especially the peace of mind. घर से दूर जाके, and you're gonna do well. We're gonna meet soon. Bye bye. I'm gonna miss you. I love you so much. Please do not cry. Bye bye. Hey, like, share and subscribe to my channel.